जितने भी एसएमई और एमएसएमई कंपनीज है, अगर गुजरात की बात करें या फिर इंडिया की, उसमें से बाय नंबर्स 70% एक्सपोर्ट में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। Correct. बट येट टेक यूज नहीं करते। मेन रीजन क्या हो सकता है इसका? When you say I know everything, you are done. Because then there is no progress. That in India, after we got independence, India was not rich. So after independence, lot of companies struggled and then become a company. Now that mindset is still not gone. So it is a problem not having billionaire mindset. Current mindset is a mindset of scarcity. That I don't have enough money. I cannot become a brand. I cannot launch my brand. किसी भी कंपनी को अपने लिए कोच या फिर सीटीओ या तो सीओ कब हायर करना चाहिए? हर एक राजा को सेकंड ब्रेन चाहिए होता है. So at different stage your second brain will also change. तो अकबर बादशाह को बीरबल का जरूरत हमेशा था. चंद्रगुप्त मौर्य जब से छोटा था तब से उसको चाणक्य का जरूरत था. Nowadays that second brain can be a AI. एक ज्यादातर क्वेश्चन माइंड में ये रहता है ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के लिए, प्रोडक्ट उसके बेस्ट क्वालिटी के है बट उसको मार्केट करना नहीं आया, Very good. तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? Countries like India and China, they are amazing in making. They are bad in marketing and selling. Exactly opposite if you look at countries like United States of America. They are amazing marketers and sellers and bad manufacturers. हमारा उल्टा वहाँ पर है. मार्केटिंग का बजट किसी भी कंपनी के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए? ये बहुत सुंदर सवाल है. कोई ऐसा गुजराती स्टार्टअप जो आप जानते हो और सीक्रेटली उसको एडमायर भी करते हो कि बहुत अच्छा कर रहा है वो अभी? अरे बहुत सारे हैं. What if your small businesses could grow fast, go global without stress or spending too much? Today's guest has helped over 91 IT, digital, and retail companies to do so. Hello, everyone. Welcome back to our channel. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. Today, we have invited Vatsal Shah, founder of Pragmatic Consultancy, co-founder of 3 startups, and a trusted business coach across India, the UK, China, Africa, and many more countries. He has trained over 19,000 professionals and 356 CEOs to helping them grow their brand, increase profit, and lead with confidence. He is also the vice president of the Magento Association, and he speaks at big events like Meet Magento, Laracon, WordCamps, and top business schools. So let's welcome the mind behind Reboot Gujarat, Mr. Vatsal Shah. So welcome, Vatsal bhai. Thank you, sir. Thanks for calling me and inviting. And it was my pleasure to come and share my views on your channel. ओके, सो मुझे तो पहले मैं आपसे अपनी जर्नी जानना चाहूँगा कि बिजनेस कोच इज़ वेरी फैसिनेटिंग वर्ड। Looks like. यस, सो आप जर्नी से बताइए कि कैसे आप बिजनेस कोच बने और किन लोगों को आपने कोच किया है? आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले जॉब करते थे कि नहीं करते थे? वो भी बताइए। Nice. So if I go back in memory lane, I started my career post IT masters. I started with IT companies. Okay. Along with that, I was professor in couple of colleges to earn extra money. In that case, what I looked at is while working in IT companies and agencies, that there are people who are on the business side. So I started learning business side of it too. And as I always had inclinations toward learning management aspects, marketing aspects, and business side, revenue, and so on, being a business-minded person, Banya family. So what I learned is other side of table. That how entrepreneurs think. I work for couple of companies from small to large companies, even the MNC also, in my early career. So I was lucky, or rather, I worked harder to get into those companies. And once a couple of years I passed by, I went under a curriculum which helped me identify what I am up to in life or where I should focus to become something. And then in that I discovered I want to get into management consulting or business coaching side. And then I left my career as a like somebody who's doing job, and I turned into a management consultant plus professor. Gradually, I continued doing that for all industries till 2015. But being an IT sector, past no experience, knowledge, exposure, it always pulled me back. And always
नेचुरल अगर आप बोले तो वही टाइप के क्लाइंट में अट्रैक्ट भी करता है. So then I work with couple of companies and help them grow from few $1,000 per revenue per month to multi-million dollar companies in a year or multinational companies. Looking at that, one fine day I decided that okay, let me just focus on IT sector, IT services, product companies, implementation companies like SIs like you, and then digital companies and e-commerce. So these were the spectrum I started narrowing down and started not working with other sectors like steel, chemical, dairy, and so on, which were my clients earlier too. And by that time, I was also teaching in like 6, 7 colleges. So I stopped that too and started my own course around uh, cultivating better version of CEOs. I would say that. And that I started in the smaller batch. Then it gradually grew up. So people demanded more, and I created more. And then now every year I run 2 batches, and then they come into revision class. I would say, and then they come on retreat to discover their new version. So this is the journey so far, and that's how you see me now. ओके, सो आपने जैसे बताया कि आपने स्टील कंपनी या फिर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपने काम इतना नहीं किया है, राइट? Yes, couple of I did, but they were all different. तो मैं इस इंडस्ट्रीज के एक फन फैक्ट की बात करूंगा But कि जितनी भी एसएमई और एमएसएमई कंपनीज है, अगर गुजरात की बात करें या फिर इंडिया की, उसमें से मैंने ऐसा देखा है बाय नंबर्स 70% एक्सपोर्ट में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, correct. बट येट दे आर नॉट इनटू द टेक्नोलॉजी So, और वो टेक यूज नहीं करते हैं. तो हाँ. आपको अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइए कि मेन रीजन क्या हो सकता है इसका? So when it comes to non-IT companies, so when I work with non-IT companies, they also sell IT technologies to non-IT business only. So when I teach IT companies how to grow and sell, technically I'm teaching them how to implement this in non-IT sectors. Okay. Whether it is a manufacturing, automobiles, or healthcare, or pharma. So we talk those use cases. They make those solutions and product and go and implement. So in a way, indirectly, I'm enabling non-IT sector only. But now when you talk about non-IT companies acceptance in India specifically, or rather say Gujarat, we look most of the time entrepreneurs look at this as a cost than investment. Okay. They don't look at in mechanical terms, leverage, right? They don't look at IT as a leverage to maximize the impact or the output. Now the trend has changed. Now people understand AI, people understand IoT, people understand computer vision. Now I am listening dark factory word in Gujarat. That is very surprising for me. So now we will have adapted at a different scale, but So what do you mean by dark factory? Sorry to interrupt you. oh, where no human works Okay. and even there is no light Oh, because robot work in dark okay. and they make things in a more precise way. So it's like think about a factory where right now you say 100% human, later you will see 20% human and 80% robots. Okay. Right. But that's where we are going maybe. All industries are picking up automation nowadays. And people like you are helping them implement too. But the point is, yes, tech adoption is now good. When I was choosing the industry, I chose IT because it was easier for me. At the same time, I was able to see that people don't accept tech that easily because I went to a publishing house, steel wiring manufacturers, dairy, even the spectacles manufacturer. And then what I do is I even chemical company. They were okay adapting martech or sales tech to increase sales. But when it comes to implementation on cost side or operation sides or experimenting on tech, they were bit reluctant कि हमारे लिए नहीं है, इससे इतना खर्चा हो जाएगा, इसका सब्सक्रिप्शन फी चलेगा, हमको वन टाइम में चाहिए. Those all questions were there. हम्म. सो इसमें एक दूसरा ये भी था कि आपने जैसे बात किया, बट इसमें बियॉन्ड वेबसाइट आप डिजिटल कैसे बोल सकते हो और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो सकती है, जो लोगों को नहीं पता है और उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए? वो मुझे जानने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. Consider my father is a businessman and he is running company which is 108-year old. Now, somebody of his age, around who is in 60s, they are still in a control of MSME sector or SME sector, and their next generation has just joined or they are in mid age, somewhere around 35, 40. But still, when it comes to decision about investment and automation, reducing people and doing more tech, those decisions are still governed by the people who are at the senior position. Now, for them, tech is having a website, having a content and SEO.
and have a lead from the website. Many people even they don't have that too. They go to India Mart and then that's done. On the name of business development, they may have a couple of callers or somebody send them email. They don't think beyond, I would say, web. But there is a huge spectrum where you can say it can be warehouse management, it can be inventory management, it can be product information management if you are a distributor, it can be your supply chain solution, logistics solution, it can be your ERP, it can be your CRM, it can be complete suite with digitization. These all are endless possibilities. अगर हम ये समझना चालू करें कि ये सब करने से बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, दैट्स वेयर द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स. इफ यू सी दिस एज अ कॉस्ट, then there is nothing like this. So it is important for all of us to see beyond a website. ओके, Right. ओके। आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया कि बियॉन्ड वेबसाइट कैसे सोचा जा सकता है। बट मेरी लाइफ का खुद का एक मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि जैसे टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, लाइक आपने इंडिया मार्ट की बात की या फिर कोई भी एक्सवाइजेड आप वेबसाइट ले लो। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मार्केट में रेट इज़ वेरी ओपन नाउअडेज़, दैट्स पर्टिकुलरली इन आवर इंडस्ट्री। Correct. ओके, सो होता क्या है कि इसमें कस्टमर को फ़ायदा है ज़्यादा रादर देन वेंडर्स और सप्लायर बोथ द साइड्स। ओके, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस। Again, it is about seller's mindset. I differ here. Think about in India, there is a company which says we automate your business at cheaper price. It is not cheap, but they say it. It's like Zoho. Let's take that as an example. Zoho one does automation of your all department per user per month, and then you spend more. One level up, some people say I want ERP, which is open source, or half open source, which is Odoo. Or some people say I want to use SAP. Sometimes if you will wonder, if you go to whatever GIDC and look at number of installation of SAP B1 is huge. If you think about real estate people or even the MSMEs or SMEs, the adoption of CRM at their place is huge. Point is, all people don't think like that. ओके, People invest money in the high-end car because they see value out of it. They have to start seeing value of tech. कैन आई अंडरस्टैंड, बट मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हम इसमें लीड के ऊपर कैसे फोकस कर पाएँ कि जैसे अच्छी लीड मिले? Ah, okay. क्वेश्चन ये था कि लीड इतनी प्रीमियम हो कि जिससे हेल्दी मार्जिन मिले। I get it. So उसके लिए किस टाइप की टेक के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर कैसा माइंडसेट होना चाहिए एज़ अ सेलर? I would say what you are doing, people should do that. You should start marketing as a system integrator or tech provider, that what all you can do. And then you will look at the right segment will come to you. That is called inbound marketing. Exact opposite, you can also select who is my customer, rather who is not my customer. And talk to only them who are having vision to spend at least that amount of money or scope and who are ready to take next leap. जिस कंपनी का माइंडसेट वो नहीं है, वो शायद आपका हेवी सॉफ्टवेयर नहीं ले। पर जो कंपनी का माइंडसेट है, जिसको ग्रो करना है, जिसको मल्टीनेशनल बनना है, उसको दर्द है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ही क्यों हूँ, मेरी ब्रांड क्यों नहीं है या मेरा स्केल कब होगा? वो सारे लोगों को अच्छी चीज़ चाहिए। हुँ, ओके। सो इसके लिए हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से कोई आप एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकते हो? Very good. Good question, I would say. One of my friend who runs a chemical factory, and as he is my classmate, he asked me that, okay, can you help and work and guide? Very interesting fact, I would say. That company was doing chemical manufacturing, and still they are doing. They are a great company. They did not have BD team, business development team, like IT companies have. And I went with the IT exposure. He said, "What magic you can bring of IT here?" So what we did is we created workflow automation for lead generation. We created a BD team, semi-automated. We implemented CRM, and we implemented their channels to lead generate with the digital tools. In couple of years, their number of leads they have double down or triple down. Because of that, what happened is the company originally what they were doing, they will go to expo, they will find people, they will buy importer, pick up the importer in that country. As an exporter, they will say take our sample and then converting. So on an average in a year, you add 3 or 4 customers. With this, they were adding 15-20 customers. Okay. Think about the scale of a company. And now out of that 15 leads, consider 7 goes into say, sampling.
And out of that, even 3 becomes a customer. Now you have container worth orders. Now you understand what is the worth or a value of one container chemical. Hmm. And if you send 20 containers like this, which were not selling earlier, what is the value of it? Hmm. So this is possible. This is doable. And now with the AI agents, it is even more possible that you can automate this whole process without human. You can run this. Hmm. Right. Think about MSMEs having more export inquiries. What will stop them become SME? Hmm. If think about SMEs having more business inquiries like this, I'm just talking about marketing channel. What will stop them to become an enterprise company? Right. So when you say we want to do make in India, we want to be export country, we want to increase our GDP, you have to make more, and when you make more, you have to sell more. Hmm. Okay, got it. Now, आपने जैसे बोला कि डिजिटल फुटप्रिंट या फिर डिजिटलाइजेशन की जो भी बात आती है, तो हम वेबसाइट तक ही आके रह जाते हैं। मुझे आपसे जानना है कि किसी भी कंपनी लाइक आप मेरी कंपनी का नाम ले लो और उसमें डिजिटल मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ गूगल सर्च इंजिन्स या तो ऐसा समझो कि अभी आस्क इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ गए हैं लाइक चैट जीपीटी। सो उसमें हम कितने मैच्योर है, अगर वो जानना है तो उसके एक शॉर्ट चेकलिस्ट दे सकते हो कि मैं आज ये पॉडकास्ट खत्म करके देख पाऊँ कि मुझे कहाँ पे वर्क करना है? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि इफ यू आर अ पेशेंट यू गो टू अ लैब टेस्ट, ओके, right? So you can hire people like me who can run your lab test. ओके, I'm not selling myself, just kidding. But at the same time, you can create a capability maturity model of B2B companies. B2B means you sell to businesses. So if you are a smaller company, what is bare minimum requirement is X, Y, and Z. हुँ, If you are a bit larger than company, then you need X, Y, Z, P, and Q. When you are larger than that, you need 7 items. When you are larger than that, you need this and this level of integration. That decides what kind of maturity you have, size of business you have, and what you should afford as a technology. Now this works in a correlation. हुँ, So think about I'm a very small manufacturer having less than 10 crore turnover and having 8% margin, for example. What I need is just website? Maybe yes. Consider exactly opposite. I'm a 50 crore turnover, want to become 100 crore company. So I have to behave like it. हुँ, So may have a small ERP, which can be SaaS. I need to have a CRM. I need to have BDT, and my site should be automated. At least bare minimum WhatsApp integration with CRM. Think about I am larger company than that. Then I need a product information management where automatic catalogs are there. My images and videos of products are automatically stored, which is damn. The way you sell sensors, how to use those sensors and those materials are there, right? Consider now you have put up that on the website. Now that becomes your digital catalog. Think about you started selling it online also. So you need to have integration with marketplaces. Think about you have a digital team which is running CRM and you have multiple warehouses. So you need warehouse management system. Now you grow bigger, you need to have integration of all this. हुँ, Then you have multi-country operations, then you need dashboards and Power Apps and Power BI kind of things which populate everything in front of you and you decide. These are the different stages. At each stage you need something. So to understand where I am in a journey, where I want to go, based on that invest to the next level. Then you reach to the next level. हुँ, ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब बिज़नेस के लिए क्या-क्या चीज़ें मायने रखती है और कैसे सोचना चाहिए। लाइक आपने जैसे बताया फ्रॉम द फ्यूचर मुझे डिकोड करना है, Correct. रादर देन फ्रॉम पास्ट बेस्ड Think एक्सपीरियंस। about you want multiple crores in future, so you do SIP today. So you're not investing in future, you are investing today. राइट। So if I want to change my future reality, I have to start working on component which is needed. हुँ, And at least not on the cost side, then at least I have to put on operation side or on my sales and marketing side. हुँ, If that is not done, then problem. राइट। सो मुझे ये भी जानना था कि लाइक मैंने जैसे पहले भी बात की कि गुजरात एंड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, बट स्टिल दे आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट मच। Correct. तो अगर कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो अडॉप्शन नहीं करने का रीज़न क्या है? लाइक आपने जितना ईज़िली एक्सप्लेन किया तो मुझे आज इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, ऐसे भी करना चाहिए. करना चाहिए, सोचा जा सकता है। तो लोग नहीं कर रहे उसका क्या रीज़न है? Good. So if I look at India originally, with all respect and love my country. So I'm not saying any negative shades. Look, take it this in a positive spirit. That in India, after we got independence, India was not rich. India used to be rich, sone ka chidiya.
then become poor country. So after independence, lot of companies struggled and then become a company. Now that mindset is still not gone. So it is a problem with the mindset, or rather not having billionaire mindset. So current mindset is a mindset of scarcity, that I don't have enough money. I cannot become a brand. I cannot launch my brand. So what I do, India has turned to outsourcing companies or manufacturing companies, which is working on contract. So India is a contract manufacturer country, whether it is IT or non-IT. In IT also outsourcing companies are there. They take order of other software companies, do it. They don't have a pride that I have end customer who is multi-billion dollar company. Rarely companies find end customers. Think about lot of manufacturers in Gujarat or in India. They take orders from other companies. Think about what was GIDC plant. They make biscuit for a Mumbai-based company. They don't have their own brand. Only few think that I want to be larger company. I also want to be known. Right. So consider that if I am not becoming a brand, in that case, my top line is frozen. I cannot have more price because मेरा ऊपर वाला जो मेरे से order दे रहा है वो ज़्यादा price नहीं देगा. Then I have only one thing to play is cost to maintain my margin. So it's all about mindset cultivation, which is around cost, not about top line. So when the mindset is around cost, everything you suggest them as a tech occurs as a cost, not as an investment. So it's a problem with the thinking of the entrepreneur. If they start thinking that, okay, I want to launch something of my brand, or I want to get into consumer market directly, which is called D2C. As you have more margin, you can play. Yes, you can be a brand. Yes. That's how we have to look at a lot of big D2C brands have emerged in India. Whether it is a food and beverages or it is a pharmaceutical, everywhere it has started. This is the reason. So you have to kill the mindset of contract manufacturing and being slave. बट इसमें मुझे एक दूसरा प्रॉब्लम अभी नज़र ये आया कि अगर सब लोग D2C ब्रांड खोलने का सोचेंगे या तो फिर D2C के हिसाब से अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ B2B भी करो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करो, बड़े स्केल पे जाने के लिए आपको बड़े ऑर्डर लेने के लिए कहीं तो पहुँचना पड़ेगा। राइट, बट इसमें देखो एक D2C ब्रांड है, फिर ब्लिंकिट या फिर ज़ेप्टो जैसे कोई बड़े प्लेयर्स आते हैं। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अगर 5 साल के बाद हमारे लोकल जो आजू-बाजू में करियाने वाले लोग होते हैं, वो ही नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे सर। आज भी लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली जाके चेक करके प्रोडक्ट्स लेते हैं। कंज्यूमर्स हैव आर वियर्ड माइंडसेट। थिंक अबाउट ऑर्गेनिक इंडिया वेंट टू प्रोसेस्ड फूड। नाउ अगेन देयर इज अ मोमेंटम बाय ऑर्गेनिक। It is going to happen. You don't know what trend and fashion is coming in and which is going away. Think about the shirt and pant we wear. Bell bottom turned to be bootcut, and in middle that was straight fit. Again straight fit, again loose fit. This is all drama going on. This happens across all industries. So when you say किराना वाला चला जाएगा, नहीं जाने वाला. किराना वाला रहने वाला है. किराना वाला become my delivery store. It will become my dark store. Blinkit will pick up from the next door and deliver at your home. That is possible. ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लाइक मैंने लिंक्डइन पे देखा कि आपने आज तक 300 प्लस सीयू को ट्रेंड किया है। I'm completing my batch next Saturday, so it will be 354 now. ओके, दैट्स ग्रेट। तो Small number, but I'm happy about ओके, it. तो क्वेश्चन ये है कि आज तक लोगों को पढ़ाने में या फिर जो भी आप सिखाते हो, तो उन लोगों में से आपने क्या सीखा? What I learned from entrepreneurs, each entrepreneur is a different use case or case study, or you can say my mentee whom I love and observe what they are doing. So I have learned a lot of things from different entrepreneurs. From one, I have learned resilience, bouncing back. Every time he falls back or goes in minus, he bounces back with a new technology. Another one is like he is an experimental guy. So keep experimenting new things. He's the first one to adapt new technology and challenge his own employee and himself also. कि हम कर सकते हैं कि नहीं. Third one is औकात से बाहर खेलना. Like being an Indian company, I will start my booth in US. I will hire a salesperson there. Why Indians sell at $20 an hour? Why can't $100? That's where he started. And then he looked at this. So some people are, they have a different mindset. I also look at some people have an amazing cost benefit analysis brain. Some people are amazing critical thinkers. So they work on their core strengths. So I learn a lot of things from them. One thing is very interesting, all entrepreneurs have in common is risk-taking appetite.
I think that is the key difference between me and them. Why I am a teacher and why they are entrepreneur. But in a way, you are also entrepreneur. Yeah, I can say I'm solopreneur. I would say I'm a professional practitioner. I don't have enterprise where a lot of employees work. In my company, I am machine. Right. So how do you see yourself in next 5 to 10 years in this journey? In this journey, I continue making masterpieces like this. I see myself doing this because I have a lot of passion. But Hmm. at the same time, I'm thinking I may be scaling this thanks to new digital era. Um, I see I'll be doing the similar thing ongoingly and will be part of India's growth strategy. Hmm. Okay. So let's come back to the topic again. मुझे ये जानना है कि ERP, AI, CRM ये बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो और हमारे ट्रेडिशनल धंधे में लोगों को बड़े-बड़े ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के समझ में नहीं आते। नहीं, उनको अगर मज़ा भी आता है ना। मज़ा आता है बट कई बार क्या होता है कि उन लोगों को लगता है कि इट्स हेडेक एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। करेक्ट, करेक्ट। बट आप मुझे ये बताइए अपने एक्सपीरियंस से मस्ट टू हैव टूल कौन-सा है जो अभी से उनको स्टार्ट कर देना चाहिए यूज़ करना? मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में एनीबॉडी कैन अफोर्ड नॉट टू यूज़ एआई एज़ देयर सेकंड ब्रेन। हुँ, And nobody can go away without using any tools or solutions around their marketing and sales, at least. So if you want to stay ahead in the competition, martech and sales tech is the area you should focus. And second, you have to start looking at AI as your second brain in decision making, ओके। because you cannot have knowledge of all divisions, all spectrum, and हुँ, all subjects. Now you have it, use it. हुँ, So I think that's a fuel. It's a new oxygen. ओके। तो वत्सल भाई आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला था कि सेकंड ब्रेन का कॉन्सेप्ट, हाँ, राइट? तो मुझे ये जानना है कि किसी भी कंपनी को अपने लिए कोच या फिर सीटीओ या तो सीओ कब हायर करना चाहिए? मतलब ऑनगोइंगली क्योंकि क्या है कि हर स्टेज पे नीड उनकी अलग-अलग है। correct. तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या सी करना चाहिए इसमें? सीएक्सओ बहुत बड़ा लेबल है। I don't think MSMEs and SMEs should have CXO person. That is my first answer. But I always believe कि अगर आप आपके राज्य के राजा है, तो अकबर बादशाह को बीरबल का ज़रूरत हमेशा था। चंद्रगुप्त मौर्य जब से छोटा था तब से उसको चाणक्य का ज़रूरत था। जब तक चक्रवर्ती सम्राट बना और बाद में बनाने के बाद चलाने के लिए भी। हुँ, So ऐसे हर एक राजा को सेकंड ब्रेन चाहिए होगा। So at different stage your second brain will also change. So lot of people have their friends who guide them. Lot of people have their industry veterans who are senior to them. They come and talk. Some people go to associations like Foundryman Association or GCCI. They talk to seniors how to do it. Many people tell, suggest, guide. Then one fine day you feel that okay, now I need ongoing help. Who can help me co-think or validate my idea? At that time, you may not pick up say CXO, but you need somebody as an outsider of your tunnel who's bring neutral version of what you are thinking is right or wrong. That person can be management consultant or a business advisor or business coach. All three are same, names are different. Now, when you bounce your idea, sometimes they don't say anything, just they listen. But sometimes they tell when you are playing a game, no, in tennis also or in cricket also, they observe player and tell where they are going wrong. Similarly, your coach, advisor, second Ben will say what's going right, what's going wrong, what you should have done differently, even after done. So what happens is next time you take care. अब नेक्स्ट टाइम वो करने से पहले सोचोगे ओके ऐसे करना चाहिए, इस एंगल से भी सोच सकते हैं. दे पुट यू ऑन अ क्वेश्चन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव समबडी हू टेल्स यू ऑन अ क्वेश्चन. Once you grow beyond a one level, then you have a director or senior manager, then maybe VPs, then CXOs. So I won't say straight away hire a CXO, but have somebody who can co-think or somebody can validate and challenge. Somebody will come and ask you every month, कि क्या हुआ, progress हुआ कि नहीं, हुँ, or are you on a right track or not. That second brain is needed, and nowadays that second brain can be AI हुँ, because it has all domain knowledge. Think about you are a business owner. You are expert in electronic communication. You are not expert in HR. You are not expert in marketing and sales. But you can ask AI what should be my next campaign. It can tell you yes. You can ask what is my in my next content calendar. It can tell.
Then you can have a third party consultant also who has years of experience with lot of whites. वो बोलेगा कि हाँ ये AI ने बोला है सही है, पर उसमें ये ऐसा ऐड एक और चीज blend करो looking at your current stage. हम्म, But you always have somebody who can tell. That helps you grow faster, and that helps you validate your idea. I also have a coach हम्म, who helped me channelize my idea. दैट्स ग्रेट। सो आपने जैसे बोला कि एट दिस एज यू हैव योर कोच, तो ये आपका बड़प्पन है या फिर एक एबिलिटी है कि बीइंग कोचेबल थ्रू आउट द लाइफ कैसे रहना? हाँ, तो एक्चुअली मुझे ये जानना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो लोग 8 से 10 साल अपनी इंडस्ट्री में निकालते हैं तो उनको एक माइंड में एक ईगो आ जाता है या फिर ऐसा हो जाता है कि मुझे अब आता है मेरी इंडस्ट्री का मुझे ही पता है। तो कई बार क्या होता है कि वो यंग टैलेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, करेक्ट, या तो फिर नई टीम हायर करने में उनको ऐसा लगता है कि इनको क्या आएगा, अभी मैंने जो फील्ड में नॉलेज दिया है राइट, उनको सिखाने में इतना जाएगा, अदरवाइज मैं खुद ही कर लेता हूँ। हाँ, तो आपने जो बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा माइंडसेट बिल्ड करने के लिए हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग अडॉप्ट करनी चाहिए या फिर कैसा वो माइंडसेट अडॉप्ट हो सकता है, वो बताइए मुझे? correct. So if you read different billionaires on earth, one of them can be Bill Gates. He always said, learn it all, concept should be there, know it all नहीं होना चाहिए. हुँ, When you say I know everything, you are done because then there is no progress. Let's relate this with the building. Consider करो कि आपकी बिल्डिंग 10 माले की है और आप 8वें माले पे, आपको लगता है तभी आपके पास स्कोप क्या है, आप 2 माले ऊपर दे सकते हैं. 10वें माले के बहुत पहुंचने के बाद आपको लगता है आई एम ऑन द टॉप. हुँ, पर आपने ये नहीं सोचा बिल्डिंग 35 फ्लोर की भी हो सकती है. आपने ये नहीं सोचा 50 फ्लोर की भी हो सकती है. उससे आगे आकाश भी है और उसके आगे एक मून शॉट भी लगा सकते हो हुँ, या फिर मार्स पे भी जा सकते हो. राइट। So it's all about your perspective. So when you see that, okay, I am good, acknowledge myself that I've done good job. But at the same time, when you say I know everything, you are not growing next. You will not evolve. You become complacent. Then you will run your company on autopilot mode. And in India, you cannot have autopilot car. रास्ते में गाय आती है, खड्डे भी आते हैं. So यहाँ पे cruise control नहीं चलेगा. So as a business owner, you have to keep learning and keep growing. You cannot say I know everything and I'm done with it. I am jack of my trade. It's good to be in that spot, but you have to keep evolving. हुँ, ओके। क्योंकि मैंने जितनी भी बार मेरे फ्रेंड सर्कल में भी देखा है, उन सबका यही प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है। दिस इज़ कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। एक लेवल पे आके सब लोग ये फेस करते हैं। आपको बुरा नहीं लगा तो सवाल पूछता हूँ. You come from humble background हुँ, and you started making money. Still, it is not enough, but you made some amount of money. Now you are wish list static. घर, office, गाड़ी. You go to club. Yeah, now you feel I am settled. हुँ, So I am okay. ये फीलिंग अच्छा है. But now everything is okay, वो फीलिंग अच्छा नहीं है. हुँ, So what happens is when you become okay and then you stop looking further, you stop progressing. हुँ, और फिर एक लेवल के बाद आपका बैकग्राउंड डिसाइड करता है कि आप कितने आगे जाओगे. मुझे ऐसा लगता है कि आपका बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है. हुँ, आप उससे बड़ा गेम सोच सकते हो और खेल भी सकते हो. पर अगर आप ऐसा सोचो कि मैं यहाँ से आया था, अभी इतना हो गया, ये बहुत है, तो उसके बाद एंड हो गया ना. हुँ, सो शायद आप जो दोस्त बोल रहे हैं कि नाउ आई एम हैप्पी गो लकी, आई एम डन विद माय, वो बोलता है ना, वो येलो लाइफ जी रहे हैं. यू लिव ओनली वंस. सो नाउ आई हैव इनफ मनी, नाउ आई स्पेंड. इट इज नॉट अ बैड माइंडसेट, बट इट इज राइट माइंडसेट फॉर ग्रोथ. नो. राइट। हुँ, ओके। सो फिर से बैक टू द टॉपिक। अ, एक ज़्यादातर क्वेश्चन माइंड में ये रहता है ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन के लिए कि हमने प्रोडक्ट तो अच्छी बना ली है, हाँ, बट अभी जो इसकी लीड होनी चाहिए अच्छी, वो क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही है। या तो फिर ऐसा समझो कि प्रोडक्ट उसकी बेस्ट क्वालिटी की है, हाँ, बट उसको मार्केट करना नहीं आया। वेरी गुड. तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? In India, traditionally, we are more of back office or manufacturing people, I would say, in all industries. And we are bad marketers. Exactly opposite if you look at countries like United States of America. They are amazing marketers and sellers and bad manufacturers. हमारा उल्टा वहाँ पे.
Countries like India and China, they are amazing in making. They are bad in marketing and selling. Think about we learn that, where we will go. So most of the time, owner thinks that my product quality will win. I agree. I respect that. Product quality has to be there. But at the same time, when you say कि मैं तो चंदन हूँ, लोग मेरी खुशबू से पहचान लेंगे, चंदन का खुशबू भी एक ही पेरीफेरी तक रहता है, किलोमीटर तक नहीं जाता है. Now you have aspiration to go miles, you have to go and sell chandan there. Right. So it's important that you are supposed to go out and market. Marketing and sales is not an optional thing. That I am a great techie genius, now world will recognize and come to me. Nobody's coming. You can shut down your factory. You cannot shut down your marketing. It has 24/7 into 365. Okay. So as per your experience, marketing का बजट किसी भी कंपनी के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल है. Now I will have answer to it in a different way. Think about you are a contract manufacturing company और आपका कंपनी का पूरा कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3 ऑर्डर पे चल रहा है और आपके साथ 10 साल का ऑर्डर है और आपको नया फैक्ट्री नहीं खोलना है, यू डोंट नीड मार्केटिंग. पर इसका प्रॉफिट आपको लगा कि दूसरी या तीसरी फैक्ट्री चालू करनी है तो मार्केटिंग चाहिए. तो फिर आप दूसरी या तीसरी फैक्ट्री से जितना धंधा करना चाहते हो उसका 15% लगाना पड़ेगा. Now you got the answer. Yes. So it's a subjective depending on your margin, subjective to your turnover, also subjective to your goal. अगर आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं करना है आगे, मैं जितना क्लाइंट है उतना संभाल के बैठूं. बट आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसमें एंटरप्रेन्योर एक लूप में फंस जाता है. करेक्ट. प्रॉफिट फर्स्ट या फिर ग्रोथ फर्स्ट? हाँ. If I do growth, I will make profit. ओके. If I just focus on profit, there is a doubt that I may not grow. ओके. ग्रोथ का बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है. ग्रोथ एक ऐसा होता है कि इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, growth in terms of number of units I make, growth in terms of profit I earn out of each unit, and I don't sell more unit but make more money out of it. So reduce cost and make that is also growing. Growth in terms of innovation and evolution also. Growth in terms of global presence also. कौन सा growth की बात कर रहे हैं? That is the question. If it is just money and nothing else, then without increasing your revenue, you can never increase your profit. Right. So anything which improve your top line, you have to do it. So if you want to focus on turnover side, Turnover and manage cost. That is the game you have to play. Then your profit will maximize. ओके. बट इसमें मुझे ये जानना है, क्योंकि मैं जो आपको जो पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाला था वो भी यही था कि जब प्रॉफिट मार्जिन की बात आती है और ग्रोथ की बात आती है, तो आप ऐसा समझो कि मैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में बात कर रहा हूँ. लाइक आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 8 CR है, मुझे 16 पे पहुंचना है. तो उस मोमेंट पे अगर मैं ग्रोथ के बारे में 16 पे डबल जंप मारने का सोच रहा हूँ, तो पहले तो वो You have to spend more in marketing and sales. You have to increase your capability to distribute or deliver. तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सपना 16 का आपने देखा है तो कॉस्ट भी आप ही पे करोगे. तो उस साल फिर घर पे कम पैसे ले जाने पड़ेंगे. वहाँ पे दर्द है. राइट. आप ऐसा मेरे को कोई भी एक इंसान बताओ जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ. नहीं है कोई ऐसा तो. हाँ. सो इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर कंपनी हु एल्स विल. राइट. सो दूसरा चीज़ है, मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर को भी मिलता हूँ कि मैं इसी साल प्रॉफिट घर पे ले जाऊंगा और अपना घर बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, खुद का बैलेंस बनाऊंगा. दूसरे टाइप के लोग हैं, मैं आधा पैसा कंपनी का प्रॉफिट अंदर वापस डालूंगा ताकि कंपनी बड़ी हो. अगर कंपनी बड़ी हो रही है तो मैं ही बड़ा हो रहा हूँ ना, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन मेरा ही है. प्रॉब्लम ये है कंपनी का वैल्यूएशन गिनना नहीं आता, इसलिए पता नहीं लगता कि मेरा वर्थ बड़ा है कि नहीं. So I know a business owner who makes 4 crore profit, but his company's valuation is 100 crores. तो वो 4 करोड़ का मालिक हो या 100 करोड़ का. So अभी आप किस नज़रिए से देखते हो वहाँ से डिसाइड करो कि मार्केटिंग में स्पेंड करना है नहीं करना है या बड़ी ब्रांड बनना है नहीं बनना. अगर ऐसा ही सोचा होता तो कोई स्टार्टअप बड़ा नहीं होता, कोई यूनिकॉर्न नहीं बना, क्योंकि सारे यूनिकॉर्न बनने तक तो लॉस में ही थे. सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा लॉस में कंपनी चलाओ, लोगों के पैसे चलाओ, प्रॉफिट करो बट प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी करो. Have a sustainable progress and play long term game. Okay. So again,
तो ऐसी कंपनीज जनरली मतलब ग्रोथ की बात आती है तो ग्रोथ किस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सोचना चाहिए कि कितना मतलब डबल सोच के फिर आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करो या फिर 1 साल में डबल तभी हो सकता है कि जब आपने पास्ट में बहुत खराब किया है। हम्म so reality check is only we can grow by 50%. नो नॉट नेसेसरी, कंसिडर इट। एक टीचर की तरह आंसर देता हूँ। अगर मेरे पास 50% वाला स्टूडेंट आया है और नालायक है, रखड़ रहा है, पढ़ता नहीं है, उसको मैं थोड़ा भी ठीक करूँगा ना, वो सीधा 70 पे पहुँच जाएगा। तो उसके लिए कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ? 50 टू 70 इज़ गुड नंबर, राइट? इन परसेंटेज ग्रोथ। Consider some student is there which is at 90%. When I push them harder and touch to 92%, it is also growth, but in percentage it is less. Right. But 92 is any day better than 70. Hmm. Or if I help somebody sustain 92 also, that is also growth. Because बाकी क्या हार रहे हो उससे? तो ग्रोथ का डेफिनेशन आपका क्या है? आप कौन से स्केल पे खड़े हो? सो कुछ लोग बोलते हैं ना 10x ग्रोथ। अगर मेरे पास कोई ऐसा स्टार्टअप आता है जिसका रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए है साल का, उसको मैं 3 साल में कुछ करके ट्राई करके हम 10 करोड़ पहुँच सकते हैं, 5 करोड़ पहुँच सकते हैं। हाँ, फिर मैं किताब निकाल सकता हूँ 5x ग्रोथ, 10x ग्रोथ। अभी एक कंपनी है जो 1000 करोड़ कर रही है, उसको मैं 10,000 करोड़ आसानी से पहुँचा पाऊँगा, तो उसके लिए बहुत मेहनत है। Hmm. बहुत कुछ अंडू करना पड़ेगा, बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, बहुत सारा नया लाना पड़ेगा, नए लोग लाने पड़ेंगे, नए टाइप का धंधा करना पड़ेगा, ओनर को अपना ईगो फेस करना पड़ेगा कि मैं 1000 करोड़ का मालिक हूँ, उसकी जगह मुझे 10,000 पहुँचना है, मैं क्या करूँ? वो जर्नी है, बहुत मुश्किल है। Hmm. तो वहाँ पे 10x पॉसिबल है। सो डिफिकल्टी लेवल हैज़ चेंज्ड। Hmm. Okay. सो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप 2x जंप 1 साल में तभी कर सकते हो जब पास्ट में आपने खराब काम किया। मतलब यू आर नॉट परफॉर्म दैट ग्रेट। Oh, yeah. But how AI can help in this? ओह! एआई कैन हेल्प यू मैक्सिमाइज़ योर नो रिपिटिटिव टास्क। वो सब उसको एजेंट्स को करने के लिए दे दो। यू डोंट नीड ह्यूमन, देन यू कैन डू मोर क्रिएटिव स्टफ और बेटर स्टफ देन ही। आपका जो बैक ऑफिस का काम है ऑटोमेट कर दो। आपका लीड जेन का काम है ऑटोमेट कर दो। आपका क्लाइंट का ईमेल सप्लाई, कस्टमर केयर, चैटबॉट ऑटोमेट कर दो। Hmm. आपका फैक्ट्री का ऑपरेशंस का सारा डेटा स्क्रीन पे आता है, उसको ट्रांसलेट करके आपके स्क्रीन पे रिपोर्ट आए, उसको ऑटोमेट कर दो। यू हैव लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन सेव ह्यूमन एफर्ट और वही सारे लोगों को बोलो कि भाई कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम करो। Hmm. Got it. So let's play one rapid fire round. गो अहेड। One word that defines success for any founder. इवोल्यूशन। Okay. Your go-to productivity tool. माइंड। थिंकिंग ब्रेक। Thinking break. Oh, that's new. So sales or branding, which one is very crucial in coming next 2 years? दिस इज कैच 22। आई हैव चिकन एग प्रॉब्लम, बट आई वुड से मार्केटिंग फर्स्ट। Marketing first. Okay. टॉप ऑफ द फनल फर्स्ट, देन सेल कन्वर्ट्स। Hmm. Okay. Your guilty pleasure when you're traveling as a keynote speaker. हाँ, वो क्या है आपका? मतलब नहीं समझे। Your guilty pleasure. आप उसको डिफाइन करें व्हाट यू मीन बिकॉज़ ये ट्रिक वर्ड। वही तो बता रहा है आपको. सो आई विल पास दिस क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम. कोई ऐसा गुजराती स्टार्टअप हाँ, जो आप जानते हो और सीक्रेटली उसको एडमायर भी करते हो कि बहुत अच्छा कर रहा है वो अभी. अरे बहुत सारा है। लाइक कैन यू नेम वन और टू? आई एम प्राउड ऑफ जर्नी ऑफ बालाजी एंड रियल ओके. in FMCG. ओके. I am proud of companies who are doing great in terms of wire and steel manufacturing. Amul is the one of the best place we can look at that how they have grown and हर बार लाइन को कितना एक्सपांड करते हैं। इन कोविड में उन्होंने जितना नया लाइन ऐड किया है, इट्स अमेजिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम गुजरात हु आर डूइंग अमेजिंग इन वायर मैन्युफैक्चरिंग, Polycab, RR Cable. There are a lot of companies who have grown very well. If you look at one of my friends' company, which is Bodal Chemical, they are doing great. If you look at in real estate, somebody like Shivalik have bring glory to Ahmedabad. So there are a lot of companies who does amazing. Not one. I cannot name one. In each sector, we have many. Okay. So if you want to define your journey in just one word, then what would be? Catalyst. Catalyst? Oh, that's great. Okay. So I think I have asked all the questions from my side. So if you want to share anything
or any advice for young entrepreneurs or second generation or third or fourth generation? All generations have one line. Okay. Good is not good when better is possible. Oh, This is the line I end my all classes, all the sessions, or all podcasts, like wherever I go. So if you feel that I'm good, but if better is possible, do it. so what is better for you? So I spread this awareness across India, be visible in a lot of podcasts like this, and spread this knowledge to many people. That would be the, I think, better version of me. Okay. So after achieving this type of success as a business coach in your life, uh, अभी नेक्स्ट गोल क्या है आपका लाइफ का कि स्पिरिचुअली या फिर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ आप कहाँ पे फोकस करना चाहोगे? I want to start investing in an area where, like in company, which is doing amazing in terms of AI and SaaS combination. In personal spiritual growth, I want to read more about Indian spirituality, go back to why human beings are the way they are and where they are not. I want to study that and learn that. And I want to be author in some years, or I would say soon. Okay, I want my book to go out. These are the immediate 3 goals I can say. Okay. So one last question. Uh, in your perspective, what do you mean by life? Ah. One fine day I learned in one of the course, life is empty and meaningless. You are the one who create meaning of your life. It's very interesting. पर जिस दिन ये समझ में आ जाता है ना, बहुत कुछ जादू होता है. And at what uh, time of phase in your life you have learned this? Oh, at that time I was 27 years old. Okay. So And you I got turned it 40. very early, so it's very good. So I tried to discover my ikigai, or you can say purpose of life, way back uh, in the early days. That's the reason I was able to discover I want to do this and not want to work in IT companies as Hmm. business guy. Okay, so the more you discover yourself, it's important. Many people say KYC is important, which is called know your client. I believe KYS is also equally important. Know yourself. Yeah, that gives you a lot of power. Okay. And business is a tool, I think, because मैंने बिजनेस की जर्नी में ये जो आपने बोला ना KYS, हम खुद को जानते हैं. Everybody has different shades in different. So you encounter your fear, you understand your uncertainties, you understand your anxiety points, you understand how to build resilience, how to bounce back and stay disciplined. Lot of things you learn when you start thinking as an entrepreneur. Right. So thank you so much, Vatsal bhai, for coming. My pleasure. Critical talk. Thank you for, and it was very inspiring session and so much learnings for me also. Thanks for great questions and uh, taking this to the MSMEs and SMEs of India. I think India needs this to grow up and gear up. And thanks to what all policies changing across the globe, India can use this as a leverage to bounce. Right. Thank you so much. Yeah. Thanks.